स्टूडेंट्स हम अब कर रहे हैं डीजी क्लास लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन 6 क्लास। ओके, आप सब ठीक है ना? ओके बेटा, हम आज करेंगे लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। बेटा आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए इसको। ओके बच्चा, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके बच्चा, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन में बेटा लाइट एंड इट्स सोर्सेस के बारे में बताया गया है। लाइट एंड इट्स सोर्सेस। Have you ever wondered why objects are not clearly visible to us at night? Or why they appear colored during the day, but seem dark or black in the dark? The answer is because of light. Objects around us cannot be visible without light. Without light, we cannot perceive color. Let's understand this wonderful phenomenon, light. We'll begin with a short activity. ओके बेटा, ये लाइट के सोर्सेस हैं। देखिए एक एक्टिविटी कराई गई है जिसमें लाइट की चीजें दिखाई हैं और जिसमें लाइट नहीं है। A variety of objects are shown here. Can you identify which of these objects can emit light? अब इनमें से आप ये बता सकते हैं कि कौन से सोर्सेस लाइट एमिट कर रहे हैं, किसमें से लाइट आ रही है? सन। ओके बेटा, सन। The sun and the other stars, fire, the burning candle, the light bulb, and the torch are objects that emit light. ओके बेटा, ये स्टार, सन, फायर, These objects are called luminous objects. ओके, इनको luminous objects Luminous objects produce light of their own. Hence, they glow in the dark. What about the other objects? The trees, the rocks, the table, and the book. Can these objects be called luminous? No. These objects are not luminous, as they do not emit light. Such objects are called non-luminous objects. What happened? Where have all the other objects gone? Well, they are still where they were. They are just not visible anymore. Non-luminous objects can be seen only when light from a luminous object falls on them and travels towards our eye. Luminous objects are also called sources of light. Any object that gives out light is called a source of light. Some luminous objects occur naturally, while some are made by humans. Can you identify which of these occur naturally? ओके बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं नेचुरल ऑक्यूपाई लाइट देते हैं, कुछ हम ह्यूमन बीइंग उसे बनाते हैं। जो नेचुरल लाइट देते हैं वो हमारे सन, स्टार और क्या है ये सन, स्टार, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स और फायर। लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बनाए गए हैं वो है कैंडल, लाइट, बल्ब, टॉर्च। ओके बेटा, और जो लाइट देते हैं उन्हें हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लेट्स सी। The sun and the other stars and fire are natural sources of light, while a candle, a light bulb,
and a torch are human-made objects. These are called artificial sources of light. The moon seems to shine at night and also provides a little bit of light in the dark. So, is it a luminous object? मून से लाइट आती है बेटा, तो मून क्या लुमिनियस ऑब्जेक्ट है? देखिए, लुमिनियस ऑब्जेक्ट बेटा किसे कहते हैं? जिसमें से लाइट आती है बेटा, उसको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो मून क्या लुमिनियस ऑब्जेक्ट है? लेट्स सी. No. Though the moon shines at night, in reality, it does not emit light of its own. It only gives off the light it has received from the sun. Hence, the moon is a non-luminous object. Like the moon, all the planets, including our Earth, are non-luminous. Non-luminous objects are also called illuminated objects. Certain living organisms also have the ability to produce light through a chemical reaction. This phenomenon is called bioluminescence. These organisms are called bioluminescent. Fireflies, jellyfish, anglerfish, squid, sea pansy, and certain kinds of mushrooms, bacteria, and fungus are examples of bioluminescent organisms. Before ending this session, let's play a small quiz. First, sort the objects into luminous and non-luminous. ओके बेटा, इसमें से आपने लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बताने हैं. ओके. सन, स्टार, फायर, बल्ब, कैंडल, टॉर्च, ये लुमिनियस है. और नॉन लुमिनियस ट्री, रॉक, टेबल, बुक है बेटा. Next, sort the objects into natural and artificial sources of light. नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है बेटा? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. सी. सन, स्टार, फायर जो है नेचुरल है, और बल्ब, कैंडल, टॉर्च ये आर्टिफिशियल है बेटा. It's time for a quick recap. Light enables us to see objects around us. Objects can be luminous or non-luminous. Objects that emit light are called luminous objects. Examples of luminous objects include the sun and the other stars, fire, a burning candle, a light bulb, a torch, and a tube light. Non-luminous objects do not emit light. Examples of non-luminous objects include the moon, the planets, a book, a chair, a table,
trees, and rocks. Luminous objects serve as sources of light. The sun and the other stars and fire are natural sources of light. A burning candle, a light bulb, a torch, and a tube light are artificial sources of light. Non-luminous objects become visible when light from a luminous object falls on them and travels towards our eye. ओके बेटा, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स का आपको पता चल गया। लुमिनियस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से लाइट आती है, नॉन लुमिनियस वो होते हैं जिसमें से लाइट नहीं आती। ओके बेटा, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। सन है, स्टार्स हैं, ये नेचुरल हैं, लेकिन बल्ब, टॉर्च ये मैन मेड हैं। ओके बेटा, क्लियर। अब आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडो देखिए बेटा। Formation of shadows. Look at the shadows formed here. What do you observe? Irrespective of the color of objects, the shadow appears dark or black in color. Why do shadows appear dark or black? Can't they be colorful? Let us first understand how a shadow is formed. When light emitted from a source is blocked by an object, a shadow is formed on a screen. Let's perform a short activity. We have an object placed in front of a lamp so that its shadow is formed on the screen. Now, let's remove each one of them and see what happens. No light, no shadow. No object, no shadow. No screen, no shadow. No shadow is formed. This proves that for a shadow to be formed, three things are required: a light source, an object, and a screen. Remember, the object must be placed between the light source and the screen for a shadow to form. Now, let's observe the shadows formed by different materials. ओके बेटा, तो आपको अब पता चला है कि शेडो बनाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए: लाइट, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट। लाइट, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट होने से ही शेडो बनेगी, अदरवाइज शेडो नहीं बनती है। ओके बेटा।
The shadow of the wooden object is dark, and that of the butter paper is faint, while the glass does not cast any shadow. Why does glass not cast a shadow? A transparent object like glass allows most of the light falling on it to pass through. As it does not block light, no shadow is formed. ओके बेटा, ग्लास देखिए, ये ग्लास दिखाया है, ग्लास में से लाइट चली गई है पर शेडो यहाँ पर इसकी नहीं बनी है। तो शेडो क्यों नहीं बनी बेटा? शेडो इसलिए नहीं बनी क्योंकि इसमें से लाइट बेटा ग्लास में से क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है, ब्लॉक नहीं कर पा रही इसको, लाइट को। अगर जो ब्लॉक नहीं करेगी तो उसकी शेडो नहीं बनती है। A translucent object like butter paper partially allows light falling on it to pass through, while it blocks some light. Thus, a faint shadow is formed. However, an opaque object like wood does not allow light to pass through at all. It blocks light. So, a dark shadow is formed. What did you observe about the shadow of the tree? Its size changes as the sun moves overhead. Let's perform an experiment to find out how the size of a shadow changes. Move the lamp closer to the object. What happens to the shadow? The size of the shadow becomes bigger as the light source comes closer to the object. Similarly, if you vary the distance of screen or object, the size of the shadow will change. The size of a shadow depends on the position of and the distance between the light source, the object, and the screen. शेडो का साइज लाइट पे डिपेंड करता है और उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे और लाइट से कितनी डिस्टेंस पे है। ओके बेटा, और लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। Let us try to identify the object by looking at its shadow. Leaf, ball, tree, hand. Did you know that we can manipulate the shape and color as well as the number of the shadows formed? Yes, you can make interesting shadows with your hands. Try it. Now, for adding some color to these shadows, just use colored light instead of white to obtain colorful shadows. You can also obtain multiple shadows by increasing the number of light sources placed at different points.
To conclude, a shadow is formed when an opaque object falls in the path of light. The requirements for the formation of shadows are light, an object, and a screen. The size of a shadow depends on the position of and the distance between the light source, the object, and the screen. In this activity, you have to identify the correct statements. Flip the flashcard to see the statement on the other side. Click Submit after all correct statements are revealed. ओके बेटा, ये सभी आइडेंटिटीज ट्रूज हैं. स्क्रीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो बनाने के लिए स्क्रीन ज़रूरी है. स्क्रीन द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन. डिस्टेंस ज़रूरी है शैडो बनने के लिए, वो उसके साइज को डिपेंड करती है, छोटा होगा या बड़ा. शैडो आर ब्लैक बिकॉज द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज वाइट. ओके, and the size of the shadow becomes bigger as the light source move closer to the object. जितने लाइट पास आएगी शैडो बड़ी होती जाएगी, जितनी दूर जाएगी शैडो छोटी होती जाएगी. ओके बेटा, इसी के साथ ही देखिए आगे आपका ये हो जाता है. ओके बच्चे, ओके बेटा, आज इतना ही है हमारी इसमें. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे कुछ. तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, देखना है. बी सेफ, बी स्टे एट होम. ओके बच्चा, ओके बेटा.